Let's discuss the next qualitative property, that is the elevation in boiling point. Elevation in boiling point. But before that, we will discuss what is boiling point. First one, what is boiling point? Let us have a liquid in a container. Suppose this one. But over the liquid, we have a pressure that is known as atmospheric pressure, due to which this solvent molecule will not vaporize. But when we heat it, on heating it, what will happen? Vapor pressure will increase. On further heating, the vapor pressure will more and more increase. On more heating, there will increase further and further. A condition will reach that the atmospheric pressure is equal to vapor pressure. When atmospheric pressure is equal to vapor pressure, then this liquid starts boiling. It means a liquid will boil when the vapor pressure of the liquid is equals to the atmospheric pressure. What we have the atmospheric pressure? That is 1.013 bar. What we have the atmospheric pressure? That is 1.013 bar. And when the vapor pressure is equals to 1.013 bar, then the atmospheric pressure is equals to vapor pressure, and at that condition the liquid start boiling. Instead of this solvent, what we have, if we have water in the form of solvent, then water when heated to 373.15 Kelvin, or we can say 100 degrees centigrade. When water is heated to 100 degrees centigrade, then it has a vapor pressure of 1.013 bar, which is equals to atmospheric pressure, and hence it starts boiling at 100 degrees centigrade. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे. बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. वाटर जब 0 डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा, तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा. लेकिन जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे वैसे वैसे वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा कंडीशन आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब उस वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा. जब उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, then in that condition the water starts boiling, and that is known as its boiling point. ये कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट का. अब हम जानेंगे कि हाउ वी कैन नो द मोलर मासेस बाय द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ये देखेंगे हम. तो बॉइलिंग पॉइंट वी नो अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग when the vapor pressure of the liquid is equals to atmospheric pressure.
For example, the vapor pressure of water at 373.15 or 100 degrees centigrade is 1.013 bar, which is equals to the atmospheric pressure. Therefore, at this temperature, water boils. In the next case, we know that the boiling point. Now we will discuss the elevation in boiling point. Elevation in boiling point of solvent. In order to discuss it, let us take solution. Let us take a container, and in the first container, what we have? In the first container, we have the solvent only. When we close it, in the first piece we have the solvent only. But in the next container, we have the solution. What we have? Solvent plus solute. In this case, what we have? Solute is non-volatile. In this condition, we have the solvent, and we know that the vapor pressure of the pure solvent is higher in comparison to this solution where we have added a non-volatile solute. We have already discussed why this is so. Because when we add a non-volatile solute, then the sum of the surface area from which the vaporization has taken place is covered by the non-volatile solute. Therefore, the surface area of vaporization of the solvent molecule decreases, and hence, in this case, we have the lower vapor pressure. Here what we have? We have higher vapor pressure. Here what we have? Lower vapor pressure. Let us see here. We have higher vapor pressure. It means this will boil at what we have. This will boil at a definite temperature, T say. But when we add a non-volatile solute, then its vapor pressure will decrease, and we have lower vapor pressure. So in order to attain the atmospheric pressure, we have to heat it more. And when we heat it more, then at that condition, its vapor pressure will increase. That will be equal to atmospheric pressure, and it starts boiling. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक कंटेनर में केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लेंगे. जब हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या होगा? हीट करने पे एक सर्टेन टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे, ये क्या हो जाएगा? इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा और उस टेम्परेचर पे बॉयल करने लगेगा. लेट्स से टी टेम्परेचर.
लेकिन जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो उसी टेम्परेचर पे इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम रहेगा इसके तुलना में। तो उतना वेपर प्रेशर और पाने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर पाने के लिए हमें इसे और हीट करना पड़ेगा, और जब और हीट करेंगे तब जाके इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तब ये बॉयल करेगा। यानी कि इसको बॉयल करने पे T टेम्परेचर चाहिए, तो जब सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो इसको बॉयल करने के लिए T प्लस कुछ और टेम्परेचर चाहिए इसको बॉयल करने के लिए। तो डिस्कस करेंगे। लेट अस नो द चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट। द चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट दैट इज व्हाट वी हैव डेल्टा TB. Let us, this will boil at TB del naught, and this will boil at TB. Then we have delta TB equals to TB naught minus TB. In this case, what we want differences. We are not going to care the positive and negative values. So for that, what we have, this temperature will be higher, this will be lower. Therefore, what we are going to do, TB minus TB naught. This temperature is the boiling temperature of the pure solvent, which will be lower due to greater vapor pressure. This will be the boiling temperature of this solution. This will be equals to delta TB. It was observed experimentally that the elevation in boiling point TB, it is known as elevation in boiling point, is directly proportional to small m. Small m, it means molality of the solution. Introducing a proportionality constant, what we got, or we should write, delta TB is equals to KBM, where KB is known as boiling point elevation constant, or we can say molal. Here we have molality, molal elevation constant, or we can say ebullioscopic constant, that is KB. And what we have, if you want to determine the units of KB, then what we have, KB equals to delta TB by molality. Delta TB is in, what we have, KB equals to delta TB by small m. The unit of delta TB is what? Kelvin. And molality is what we have, moles into kg of solvent. What we have the unit? Kelvin kg per mole. The unit of kb is Kelvin kg per mole. What we are searching here, delta TB equals to kbm, or we can say delta TB equals to kb. M equals to, M we know, M equals to what? Moles of solute. We should write N2 by
N2 by solvent in kg. Or we can say delta TB equals to Kb, N2 is equals to W2 by M2, and if the solvent is in gram, so we should write W2 divided by 1000. Or we can say delta TB equals to, or delta TB equals to Kb W2 by M2, here we have W1 by 1000. This is what we have. This is known as elevation in boiling point. This is known as boiling point elevation constant. Wt is known as the mass of the solute. M2 is known as the molar mass of the solute. W1 is known as the mass of the solvent, and we are going to solve it in gram, and we are going to divide it by 1000. Then what we have? We have M2 equals to Kb W2 into 1000 by what we have, W1 into delta Kb. This is the formula. If we have the value of Kb, if we have the value of W2, means the mass of the solute added in the solution. This is the mass of the solvent taken. This is the elevation in boiling point. If we determine the elevation in boiling point by experimentation, then we can determine the molar mass of the solute added. तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से, इस मेथड से हम मोलर मास सॉल्यूट का निकाल सकते हैं जब हमें बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन एक्सपेरिमेंटली पता चल जाए. Let us discuss the elevation in boiling point by graph. What is this? We have, this is known as vapor pressure. Vapor pressure of solvent. Here what we have? We have the temperature in Kelvin. Let us say we have this vapor pressure that is equals to 1.013 bar. That is equals to atmospheric pressure. In the first condition, when we have the pure solvent, then in case of pure solvent, the solvent is volatile, and when the solvent is volatile, let us say this is solvent at lower temperature. When we increase the temperature slowly and slowly, then the vapor pressure of the solvent increases and increases, and at a certain temperature that will be equals to 0.13 bar, that is known as atmospheric pressure. Here the vapor pressure of the solvent is equals to 0.13 bar, and at this condition the solvent start boiling, and therefore it is known as TB naught. What is this? This is the solvent. In the next condition, when we add the solute, then at same temperature the solvent has higher vapor pressure, where the solution has lower vapor pressure. This is the same temperature. Here, let us assume the vapor pressure of the solution is this. Then, in case of solution 2, when we increase the temperature, then the vapor pressure increases,
and increases and increases. When it reaches, let us say, at this temperature TB, the vapor pressure of the solvent is equal to atmospheric pressure, but the vapor pressure of the solution is lower than the vapor pressure of the solvent at same temperature. Why? Because we have added non-volatile solute. In order to increase its vapor pressure equals to atmospheric pressure, we have to heat it more. When we heat it, then at a certain temperature, its vapor pressure is equals to atmospheric pressure, which is equals to 1.013 bar. At this temperature, the solution starts boiling. Let us say the temperature we have TB. Then from here to here, this is known as delta TB. This is known as delta TB. This is solution, solvent. This is known as increase in boiling point of the solution of the solvent on addition of non-volatile solute. एक बार और देखेंगे, ये वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, ये टेम्परेचर है। हम जानते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाया और वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। एक सर्टेन टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 बार के बराबर हो जाएगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। जब हमारा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो उस समय हमारा जो सॉल्वेंट है वो बॉयल करने लगेगा, और हमने लिखा है यहाँ पे TB नॉट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दूसरा केस, जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, तो अगर सॉल्वेंट है हमारा और सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तुलना करेंगे। जब दोनों एक ही टेम्परेचर पे होंगे तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक होगा इन कंपेरिजन टू सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है, तो इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम है, दोनों एक ही टेम्परेचर पे हैं। लेकिन सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे। अब यहां देखिए, इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1.013 बार है, उसी टेम्परेचर पे अभी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया है। अब इसका वेपर प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं बॉइलिंग कराने के लिए, तो और टेम्परेचर देंगे, और टेम्परेचर देंगे, और टेम्परेचर देंगे, और एक डेफिनेट टेम्परेचर पे इसका भी वेपर प्रेशर जो हायर होगा, इसका भी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। उसको हम TB से रिप्रेजेंट करेंगे। ये और ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, और इस तरीके से इस डेल्टा TB से डेल्टा TB इक्वल्स टू KBM, इस फॉर्मूला से हम मोलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं सॉल्यूट को। तो दिस इज द टू टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड। द फर्स्ट वन इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरा जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।